Yeah. Okay, Yes. great. Someone answered in the group stating the availability zone and set. It's a bit confusing, guys. Please do not use the word salad. Don't do that in your interview. There's no such thing called availability zone set. It's either availability set, which is at the data center level, or availability zone, which is at the region level. Right? There's nothing called availability zone set. So if I read that answer that we can't add existing VM to an availability zone set after it is created, I'm not sure if you're talking about availability zone or availability set. Right? So be very clear and specific with your jargons. Availability set is a different thing and availability zone is a different thing. Availability zone set is no, there's no such thing in Azure. Okay. VM must be created within the availability set to make sure they are correctly distributed across the hardware. So I guess Sunil is talking about availability set, where this answer is correct. The only mistake I see here, वो उसमें बीच में zone add हो गया है Sunil. So make sure availability zone set नहीं है, वो सिर्फ availability set है. Okay. Now we were talking Okay. about availability zone. तो availability set का आंसर मिल गया हम लोगों को. आंसर is correct. Yes. Someone else, रजाक भाई ने भी यहाँ पर दिया था Zoom के chats में. And Sunil also answered here. Both are correct. The only change you have to do it there, Sunil, is it's not availability zone set. It's availability set. Right. So ये हो गया. The next question was, can you add an existing server to availability zone? जैसा ये server है मेरा, इसको availability zone में add करना है. Can we do that or not? I guess no. No, you have to do in the beginning only. We can. I mean, I just saw the option here and I started doing it. For some reason it's working or not, I don't know, but let's see. When I was here on this machine, I got this option that you can migrate it to the zone. Initially, earlier it was not there, but now I see this. So it is there. I clicked on started and it ran some process. It took few minutes. And after that, hopefully it will be a part of availability zone. So let's see if it is or not. But we can, even if it is not working here, option is there, some with some errors, etc. Guys, are you able to hear me properly? Yes. Okay. Yeah. Someone is not able to hear, so I'll just reply to him. Right. So this is the machine, right, which was it's done, I guess. But is it a part of availability zone or not? Let's see. By the way, where can I see if it is a part of availability zone or not? In this section, availability plus scaling. यहाँ पर availability set भी दिख जाता है. ये machine किसी set का हिस्सा है, zone का हिस्सा है. If yes, then कौन सा region and कौन सा zone, right? With that, you can see here also. उतना अंदर भी जाने की जरूरत नहीं. If you guys remember, आप लोगों की machine पे मैंने यहीं पर highlight किया था. This machine is a part of availability zone, and ये zone 1 का है machine. This must be zone 2. Here it is. This must be zone 3. This is the machine which we created. This is also in availability zone, लेकिन ये अलग है, ये West US का है, तो ये दोनों similar zone के नहीं है, right? And this is the machine which we created, and we wanted this machine to be a part of availability zone. And here it is, guys. It wasn't there earlier, but it is now. Can you see this? So yes, it is possible. It is possible to move a machine to availability zone. So But it it's given all, Existing machine. yes, it's existing giving machine. an option to us, right? To select the availability zone, like whether we want to select Yes, 1, 2, or yes, 3. yes. Yeah, okay, you can. It is not Like the always option here. necessary. It's not always necessary that I go here and I create a new virtual machine और मैं तीनों zone को एक साथ select कर लूँ. And it's not even necessary that I use all three zones. मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मेरा machine जो है ना वो crucial तो है, ठीक है, my machine is crucial, but that not that crucial कि मैं 3 machine बना लूँ. मुझको availability zone चाहिए, but मुझको I'm happy with 2 zones. तो मेरी जितने भी मशीन होगी ना वो 1 2 1 2 1 2 में ही चलती रहे. फर्स्ट मशीन यहाँ पर, सेकंड मशीन यहाँ पर, थर्ड मशीन यहाँ पर, फोर्थ मशीन यहाँ पर, सिक्स्थ यहाँ पर, सेवंथ यहाँ पर. दैट वन आई कैन डू. और आई कैन से दैट I am planning in future I may have, right?
As of now, let me create only one machine, zone 1. In future, whenever I create, I am going to put one machine in zone 2 or zone 3. Yes, sorry, you were asking something? Getting in this upgrade, right? Sorry, what was that, Shahrukh? वो जो जोन का ऑप्शन था वो अब भी न्यू अपडेट्स में आए हुए हैं, राइट? No, it was पहले always नहीं there. था. No, Okay. it was also always there. Zone wala setup. What new I have seen is adding an existing machine to a zone. Yes, वो पहले वही नहीं वही था. पूछ रहा मैं. Okay, पहले okay. नहीं I था. thought this is zone 1, zone 2. हाँ, ये No, वाला no, option. no. Let's say this machine of mine. Okay, it is not a part of any availability zone. ठीक, if I check here, ये किसी भी availability zone का हिस्सा नहीं है. Now I want to get this machine into an availability zone. So yes, I can do that. कुछ नहीं कर रहा है. क्या कर रहा है? आपकी मशीन का पूरा एक रेप्लिका कर रहा है. आई मीन दिस ऑप्शन वाज ऑलवेज देयर, लेकिन मैन्युअली था, हमेशा से मैन्युअली था. क्या करते थे हम लोग कि कोई क्लाइंट अगर बोलता है इट इज मस्ट दैट आई शुड हैव दिस मशीन इन अवेलेबिलिटी जोन. So what we used to do, we used to clone that machine, copy that machine, recreate the machine. इसमें डेटा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ एज इट इज रहेगा. एट द टाइम ऑफ क्रिएशन उसको बस ऐड कर दो आप अवेलेबिलिटी जोन में. सेम चीज अज्योर ने भी आपको ऑटोमेटिक करके दे दिया. द मोमेंट यू क्लिक हियर, I don't want to do this with my machine. You can try, you can create a machine and you can do this. ये सब प्रैक्टिकल जब आप करोगे ना गाइस, then only you will learn. मैं यहाँ पर करके बताऊंगा, इट्स ओके, यू विल सी इट, बट देखने से यू विल नॉट लर्न. यू गो टू पोर्टल एंड यू स्टार्ट डूइंग दिस. ठीक है, I select the region and I select zone, and when I select zone I click next. और the moment I click next, ये पूरा रिव्यू करेगा प्रॉपर्टी. एंड इफ आई क्लिक नेक्स्ट, ये सेम मेथड करेगा जो हम मैन्युअली करते थे. वो मशीन का पूरा कॉपी करेगा, नई मशीन बना देगा, उसको जोन में डालेगा, and then your machine will be available in availability zone. Is this clear guys to everyone? Yes. For example, look at this one. इस मशीन के साथ मैंने ये किया. This machine I created, right, without availability zone, and I performed availability zone to add to availability zone. तो इसने क्या कर दिया, इस मशीन का पूरा कॉपी बना दिया. यहाँ पर look at this. Above one is the copy. पूरी कॉपी बना दी with data, with IP configuration, everything. और इस मशीन को स्टॉप कर दिया. So now न्यू डेटा वो सब कुछ जो है इस मशीन में आएगा, प्लस ये मशीन मेरी अवेलेबिलिटी जोन में आ चुकी है. रही बात ये एक नया रिसोर्स ग्रुप क्यों बना दिया, दैट्स ओके. रिसोर्स ग्रुप कैन बी मूव. वी कैन मूव वन मशीन फ्रॉम वन रिसोर्स ग्रुप टू अनदर रिसोर्स ग्रुप. और वैसे भी आई टोल्ड यू रिसोर्स ग्रुप में कोई खास फर्क पड़ता नहीं. इज दिस क्लियर सो गाइस? हम यस. सो हमको समझना पड़ेगा कि वो मतलब सॉरी डुप्लीकेट है, हम लोग कैसा फाइंड करेंगे? मतलब उसका कॉपी क्रिएट हुआ है. वो प्रोसेस Stop में दिख रहा था working. आपको. वो प्रोसेस में दिख रहा था आपको पूरा. when you go there and click on that option, it was showing that it is being migrated. and यहाँ पर आपको नाम से भी पता चलेगा this is ECS2 में बना लिया है, and your original machine will be stopped. this is in stop condition. ये आपकी ओरिजिनल मशीन है जो स्टॉप कंडीशन में आ गई है. ओके. and your original machine is still not a part of availability zone. सबसे मेजर चीज, जो आपकी ओरिजिनल मशीन थी वो आपकी अवेलेबिलिटी जोन में मूव नहीं हुई है. it created a copy of your machine and moved that machine to availability zone, zone 2. ओके. एंड जो यूज नहीं कर रहे हम लोग वो डिलीट कर सकते हैं, राइट? Yes. Once you are tested and everything is done, then that machine will be decommissioned. Will be as in you guys will have to do it. It won't be decommissioned automatically, but you can explain this process in your interview. When they ask, okay, can you recall any toughest moment? क्या आया था? Then you can say, okay, there was a prod server, or there was a server which was very complex server where they did not have support from application owner. Normally, why they don't want to create a new server? क्योंकि सर्वर में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है ना, उसके लिए वेंडर सपोर्ट लगता है, उसके लिए पे करना पड़ता है. सो एप्लीकेशन ओनर्स दे डोंट वांट के मेरा ये सर्वर को आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, मैं फिर से सॉफ्टवेयर टीम को पैसे दूं उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए. बट इफ यू डू सच एनीथिंग लाइक दिस, तो इसमें आपको एप्लीकेशन टीम को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ा. इसका पूरा का पूरा रेप्लिका बन गया. और स्टिल फॉर सम रीजन अगर ये नहीं चल रहा है, यू कैन शट इट डाउन और इसको ऑन कर लो. आपका एग्जिस्टिंग सर्वर वैसे ही पड़ा है. सो यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन मेक योर ओन स्टोरीज लाइक दिस. This is how you will portray, you will be able to portray that you have worked. So you can say, there was a request from user. He wanted to move a machine, an existing machine to his own, which is not possible normally.
but we use this feature and we created a clone of the machine. वो अपने आप ही बन जाता है. Okay, you don't have to do that anything. You go ahead and create one machine. By the way, guys, one question. Based on your accesses, do you think you will be able to perform this practical? I'm not this question is not for Deepak and not for Sunil, apart from these two, or people who have ownership access at group level or at subscription level, not talking to them. You have ownership access only at your own resource group. Will you be able to perform this practical? No. Why the not? same कहाँ पर resource group. कहाँ पर फंस जाओगे आप? रीडर एक्सेस नहीं, ओनरशिप ग्रुप चाहिए, ओनरशिप राइट चाहिए ना. क्यों? हमारे what? रिसोर्स ग्रुप में बना सकते हैं, राइट? नहीं guys, understand one thing. When you click here, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो ये ऑप्शन नहीं देता है आपको रिसोर्स ग्रुप वगैरह का. आई एम नॉट श्योर, अगर देता है तो लेट्स सी. इट्स अ गुड क्वेश्चन. लेट्स सी. If I want to move this machine to availability zone, okay, this has been already moved actually. Now you will not be able to do that, guys. क्यों? Because at the time of moving this machine, उस process का हिस्सा है एक नया resource group बनाना. Do you guys have access to create a resource group? Is your ID, does it have an access to create a resource group? No. No. इसीलिए आप यहाँ पर फंस जाओगे, आपका प्रैक्टिकल इसी में फंस जाएगा. बिकॉज जिस आईडी से आपने इसको इनिशिएट किया है, उस आईडी को एक्सेस ही नहीं है कि वो नया रिसोर्स ग्रुप बना सके. इज दिस क्लियर गाइस? यस. प्लस यू डोंट हैव टू. Yeah, they can move, but they can create virtual machine with zones and all, practice all those things in their resource group. Yeah, they can create. Why not? Of course they can. They can create new Yeah. machines. I'm talking about moving an existing machine to a zone. That is not possible No, because one of the that not. steps is to create a new resource group, which is not allowed for their IDs. Okay. Got it. Correct. Okay, guys. Got it. Let's go and talk about these options. Okay, यहाँ तक हो गया, guys. We are done with our high availability option. Now tell me one thing. My application is very crucial, guys. आपने मुझको डेटा सेंटर का दे दिया अवेलेबिलिटी सेट, आई वाज नॉट हैप्पी. आपने मुझको बोल दिया अवेलेबिलिटी जोन, आई सी ओके, लुक्स गुड, लुक्स प्रॉमिसिंग, बट यू नो व्हाट, मेरा एप्लीकेशन इससे भी ज्यादा क्रूशियल है. व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन पुणे, वॉर लाइक सिचुएशन, अगेन यूक्रेन एग्जांपल, राइट, इसराइल पैलेस्टीन एग्जांपल. व्हाट इफ समथिंग like that happens to your city? What about my application then? So we do have another level of redundancy for this, which is called disaster recovery, which is called DR, disaster recovery. ठीक है, बट वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और कंप्लीटली इससे अलग है, और वो एक पूरा का पूरा अपने आप में एक टॉपिक है. सो वी आर गोइंग टू डू दैट, बट नॉट हियर, यहाँ पर नहीं कर रहे, बिकॉज द अप्रोच और मेथड विच वी हैव टेकन हियर, वी आर फॉलोइंग दिस मेन्यू. यहाँ पे इस मेन्यू में जो जो आ रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं. बट देयर इज अ टॉपिक, और बहुत क्रूशियल टॉपिक है. विदाउट डिजास्टर रिकवरी आपका माइग्रेशन नहीं होता है, विदाउट डिजास्टर रिकवरी कुछ भी नहीं होता. सो डिजास्टर रिकवरी वी आर गोइंग टू डू फॉर श्योर. ठीक है, बट टिल हियर वी हैव कवर्ड अवेलेबिलिटी जोन, और वो डायरेक्टली यहाँ से होता भी नहीं है. लुक एट दिस, यहाँ पर कोई आपका अवेलेबिलिटी सेट में डिजास्टर रिकवरी का ऑप्शन दिया भी नहीं है. एंड VMSS वी आर गोइंग टू डू लेटर. So is it clear guys कि these are not only options. अवेलेबिलिटी सेट में डेटा सेंटर के बिल्डिंग लेवल तक रिडंडेंसी मिल रही है, अवेलेबिलिटी जोन में उस पूरे सिटी रीजन के लेवल में मिल रही है. बट व्हाट इफ द होल रीजन इज डाउन, और होता है माइक्रोसॉफ्ट का रीजन भी, एंड इट्स नॉट ऑलवेज वॉर एंड फ्लड एंड वगैरह, कई बार पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट का रीजन डाउन होता है. सम इंटरनल इशू, कोई कोडिंग का इशू, कोई नेटवर्किंग का इशू, पूरा का पूरा रीजन डाउन हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट का. देन व्हाट विल यू डू? इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट इतना बुरा कुछ होगा, ऐसा ही नहीं है, कभी कभार टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं. तो कैन आई गेट रिडंडेंसी? यस यू कैन गेट, व्हिच इज कॉल्ड DR, व्हिच इज disaster recovery, but we'll do that later. But option is there, remember, right? इसके बाद हमने ये कर लिया, then we are left with security वगैरह. इसको we'll start from next week. Today I want to cover something from here which is more relevant as of now, I think, because आप लोग अभी इस week भी machines बनाओगे,
So you should know all these things. Okay. Just 1 minute, guys. Yeah. So this is the machine. This is the overview page. Under overview page, we have an option to connect. By the way, guys, do you have any questions on these machines? Anything? Availability zone, availability set? If not, I'll start deleting them. Yes, guys. No. Yes, no, maybe. Okay, let's forget it. I'll No. leave it. Fine. So ये machine तो मैंने बना ली गई. ठीक है. How do I connect to this? So there are multiple methods. Windows का अलग होगा, Linux का अलग होगा. We are stick to Windows as of now. Linux किसी को चाहिए? Let me know. I will show one machine of Linux also, because mostly I know Windows commonly use होता है. Right? By the way, connect वगैरह करना आपका काम भी नहीं होता as an administrator, but you should know as of now. ठीक है. IP address ले लिया आपने यहाँ से. You go ahead and open Remote RDP. desktop. Yes, it's a tool. You type in that here, and you get login ID and login password option. मेरे में नहीं मिला because already saved है and it took logged in directly. Let's create with some. Let's try with some new machine. Let's try with this one. The one which we have provided while creating the virtual machine, right? Sorry, what? Yes, username and password, right? So I open RDP. I type in the IP address here. Click connect. It will give me a pop-up of user ID and password. Now, what is this user ID and password, guys? This is the same which I told you that I keep same for all of them, and the one which you select while creating user ID and password. So this is my user ID and the password. If I click remember, next time se nahi magega, but this machine I will be deleting. So this is how you connect to a machine. Right? How to connect to a Linux? Ask me, I'll guide you. How to connect using Mac? If someone has Mac, ask me, I'll guide you. If anyone has it, we'll cover it. If not, we'll skip it. So this is how you connect to your machine, guys. अब इसके ऊपर कनेक्ट करके किसी डेवलपर को डेवलपमेंट करना है, IIS रोल इंस्टॉल करना है, whatever they want to do it, they can do it. IIS रोल क्या होता है? It is to host the website. Can you guys go to your browser? I'm just trying to explain it to you कि कोई क्यों रिमोट लेना चाहेगा इसका, आपका डेवलपर क्यों रिमोट लेना चाहेगा इसका. So can you guys go to browser, and मोबाइल का ब्राउजर हो या लैपटॉप का हो, though I always recommend you to laptop, and type in this IP address 4.152.252.171. Can you see this IP address, guys? At the top, can you see this IP address? Yes, yes. Yeah, please type into your browser and let me know. Can you just paste that IP address into the chat window, please? Yes, I'll do that. I've done it. Are you guys able to see anything? Loading. I mean, ideally you should not. Yes, Because it's blocked. This site cannot be reached, not secure. Because by the way, there is no site, there is nothing on that server. Yes, this is the reason you are getting too long to respond, not available, etc., etc. But now if someone wants to host a website on this one, right? If they want to host a website on this one, then they will require a server. They will require RDP to that server, so they can deploy their website on that server. This is the reason someone would like to take a remote to this computer. Is it clear, guys? Yeah. They want to do some coding, they want to apply their coding, they want to copy and paste their coding, वहां पर coding करना है, जो कुछ करना है उनको, whatever they want to do it. But for that, they want to connect to that machine.
hence they will take the RDP. So that option is here. जो हमने यहाँ पर manually किया, that you can do from here. You can click on connect, download the RDP. इससे कुछ नहीं होगा, यही टूल का एक शॉर्टकट डाउनलोड होगा, एंड यू डबल क्लिक ऑन दैट, एंड जो यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपने किया था वो यहाँ पर ये करना है, और डायरेक्टली यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू योर मशीन. यू कैन ट्राई दिस मेथड. There are many methods, but as of now we are sticking to this one, RDP, remote desktop protocol. That is your first option. Is this clear, guys? This option, this is your first option. Any doubt, any questions on RDP? Yes, guys. Yes, no, maybe. Any doubts, any questions you have? If not, let's move to next option. So the next option here is start. Why is it grayed out now for this machine? It's already running. Already It is stopped. already running. Simple. Restart. You all know what is a restart. Now let's look at the stop option. Okay, I'll stop this machine. I'll go ahead and stop this machine. What is the current status of this machine? It is Running. Running. Now let's see. If I click on stop, what happens? Why do we need restart button for that? Restart could be many things. RDP नहीं चल रहा है, machine hang हो गई है. Why do you restart your laptop? Why do you restart your phone? Is there any update if we have update any virtual machine for that we have to restart? वो रिस्टार्ट अपने आप हो जाता है. एंड बाय द वे वो आपका काम नहीं होगा. ओएस लेवल के अपग्रेड जो है ना, वो विंडोज टीम देखेगी. इफ इट इज लिनक्स, वो लिनक्स टीम देखेगी. अंडरस्टैंड? यू आर नॉट गोइंग एज अ सिस्टम एडमिन गाइस. ओएस लेवल के काम आप नहीं देखोगे, वो टीम देखेगी, और वो रिस्टार्ट वो लोग ओएस लेवल से कर लेंगे, खुद ही हो जाएगा. और जो माइक्रोसॉफ्ट की अपग्रेड्स अगर कुछ होगी, माइक्रोसॉफ्ट उसको खुद रिस्टार्ट कर लेगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. दिस यू विल डू फॉर सम ट्रबल शूटिंग. और लेट्स से आपने कुछ ऐड किया है मशीन में, देन यू विल रिस्टार्ट for any reason, but you have a restart button here. Okay, then you have stop button. Now it shows stopped deallocated, and there is the machine which we have taken remote to. एक ये मशीन है, ठीक है. इस मशीन को मैं कर रहा हूँ शट डाउन. एक मशीन को मैंने क्या स्टॉप वहां से, और एक मशीन को मैं कर रहा हूँ शट डाउन ओएस लेवल से. Okay, yeah. So this machine I stopped from portal. This is portal, okay, and one machine I stopped from this machine. I stopped from OS level. What is the difference do you see in both of these machines? One is stopped and another one is delocated, I guess. Yeah, perfect. But what is the difference? What does it mean? Disconnected. Disconnected the RDP by operating system, and other is from the portal we stopped the machine. No, not really. I did not disconnect the RDP. I shut down the machine. Disconnecting के लिए मैं इसको बस close करना था उसको. If I disconnect the RDP, will that shut down the machine? Billing will No. stop by stopping the machine. Stopping it will stop. Okay, The let billing me will be explain. stopped. That's okay. Let me explain. Yeah, good guesses. Very close. When I stop the machine, guys, मैंने सिर्फ operating system को shut down किया है. But the CPU which I have taken on rent, Azure से जो CPU मैंने rent पे लिया है, 8 GB RAM जो मैंने Azure से rent पे लिया है, I am still holding on that. मैंने मशीन को शट डाउन किया है, बट आई एम स्टिल यूटिलाइजिंग 2 GB रैम. मतलब मैं यूज नहीं कर रहा हूं, बट ये मेरे नाम पे अभी भी अलॉटेड है. 2 GB 8 GB रैम एंड 2 वर्चुअल सीपीयूज. इसका मैं स्टिल पे कर रहा हूं. व्हाई एम आई पेइंग? बिकॉज मैंने उसको ओएस लेवल से शट डाउन किया है. अज्योर को नहीं पता है कि मैंने उसको शट डाउन किया, क्यों किया है, एम आई गोइंग टू यूज दैट और नॉट. As of now, Azure is not capable to use this 2 CPU and this 8 GB RAM for some other server.
या किसी और क्लाइंट को Azure नहीं दे सकता है। इज इट क्लियर गाइस? बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड इट फ्रॉम OS लेवल, इसलिए ये स्टॉप्ड। मेरा एलोकेशन जो है मशीन के हार्डवेयर का, इट इज स्टिल देयर एंड आई एम स्टिल पेइंग चार्जेस फॉर दिस। बट व्हेन आई स्टॉप इट फ्रॉम द पोर्टल लेवल, it shows stopped deallocated. First step. Yeah, this machine 02, this machine is stopped deallocated. This machine is stopped. Now look at this. One more thing. इसका जो है मैंने OS level से stop कर दिया. I am paying for my CPU and RAM, and I am paying for my IP address as well. This machine, public IP is payable, private IP free होता है. Hence, you guys have to go through those networking videos. As of now, बस इस perspective से देख रहे हैं हम लोग. यहां पर ये दिख रहा है मुझको that okay, I have opted for this one, but I am not paying for this as of now. ये बस information के लिए दिख रहा है कि whenever I turn on my machine, ये मेरे machine का size होगा. Why am I not paying this? Because I asked them to deallocate it. I'm saying कि यार अगले 8 घंटे मैं मशीन यूज नहीं करने वाला हूँ. So you are free now. Wherever you want to utilize this 2 GB RAM, it's up to you. And it's not necessary 8 घंटे. मैं 8 घंटे बोल के अगले मिनट पर चालू कर दूं, it's okay. But 10 मिनट भी अगर मैंने यूज नहीं किया तो I'm not paying for these 2 CPUs and 8 GB RAM. And in this case, I am paying for these 2 CPU and 8 GB RAM because I shut it down from OS level. But मैंने हार्डवेयर को स्टिल रखा है और इस पब्लिक आईपी को स्टिल रिटेन किया है. Is this clear, guys? Yeah. Okay. Next thing is hibernate, leave it, delete, capture. ये जो है स्नैपशॉट टाइप है, ये एक बैकअप टाइप है, तो इसको हम स्टोरेज के साथ और बैकअप के साथ करेंगे. Delete. Let's have a look at the delete option now. If you want to delete a machine, you can go to that resource group I told you and delete everything. But now look at this. I have n number of machines here. Can I select? I want to delete just one machine. Do I have the liberty to select all and delete it? Can I do that now? No. Can I delete my resource group directly? I mean, technically I can, but aim here is to delete one machine. So is it the right approach to delete everything here? Delete the resource group? Yes, guys. Is it? No. 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 टास्क क्या है आपको कि एक मशीन डिलीट करनी है. कौन सी मशीन? ये. सो यू कैन कम हियर. देयर आर टू ऑप्शंस. एक तो आप इसको कॉपी कर लो, मशीन के नाम को, गो टू रिसोर्स ग्रुप, और इस नाम से जितने भी रिसोर्स मिल रहे हैं ना आपको, delete them. Delete them. You will never delete the shared resource. जैसे shared resource मैं बताता हूँ क्या है इसमें. अब इस मशीन में भी और रिमेनिंग मशीन्स में भी वर्चुअल नेटवर्क सेम ही यूज हो रहा है. दिस इज योर वर्चुअल नेटवर्क. आई वोंट बी एबल टू डिलीट इट. इनफैक्ट मैं डिलीट कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि दूसरे मशीन इसको यूज कर रहे हैं. राइट. सो दैट इज वन मेथड. और अनदर मेथड इज यू कम हियर एंड डिलीट इट. सो यहां से आप इसको डिलीट कर सकते हो. एंड इट विल आस्क डू यू वांट टू डिलीट द related options or related resource to this. So yes, I want to delete it. And simple, this machine will be deleted. If it is running, it may give some error. Shut down करना पड़ सकता है शायद, और maybe हो भी जाए. Is this clear, guys? Yes. Yeah. Okay, next option, refresh. You all know. Open in mobile. Mobile में आपको ऐप चाहिए तो feedback आपको पता है. CLI will do later. Right? So ये हुआ कवर हमारा, ये upper line वाला menu. One thing I have to cover, guys, which is quota. Very important because this will help you to understand the error. It will help you to plan your practicals. Now, what is quota? First thing, quota you will not see maximum time on enterprise level agreement. Enterprise level agreement होता है ना, उसमें quota नहीं दिखेगा. ट्रेनर वाले जो सब्सक्रिप्शन है, लाइक मेरा, आप देखो हाउ मेनी मशीन्स डू आई हैव. 10 प्लस मशीन्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है और 10 करूंगा, स्टिल यू विल नॉट सी, उतना छोटा कोटा नहीं दिखेगा. बट विद अ फ्री सब्सक्रिप्शन, गाइस, देयर इज अ कोटा दैट at one time you can have only 3 IP addresses, 3 public IP addresses. जब तक आप उसमें से एक नहीं डिलीट करोगे, आप चौथी मशीन नहीं बना सकते हो. So on one subscription, if you guys are practicing,
इतने लोग हमारे सब्सक्रिप्शन में हैं, सो एंड इमेजिन दैट आपने मशीन बना दी और यू डिड नॉट इवन लेट मी नो, वो मशीन वैसे ही पड़ी एंड यू डिड नॉट डिलीट, लेट्स से आपने बता भी दी, मैंने चेक भी कर लिया ना, आई आस्क्ड यू टू डिलीट इट, बट आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम नेम्स. Sharmili created a machine, she asked me to check, I checked, and I asked her delete it, but she did not delete it. Similarly, Sonali created one, she did not delete it. Similarly, Shahrukh created one, he did not delete it. Sohan trying to create his practical, will he be able to create? No. Why not? Because you have a quota on your machine, on your subscription. Let me log into one of your subscriptions and then I'll show you. And this In that quota you case, cannot get increased in your trial subscription. Quota error कभी कभार production server में भी आता है, production environment में भी आता है, but you simply have to raise a ticket with Microsoft and they increase the quota for production environment or the pay as you go or enterprise agreement वाले इसमें. But if you are using free trial, तो free trial में आप लोगों को ये option नहीं मिलेगा. Sorry, someone was asking something. in this like if we relocate, then only the next person will be able Yes. to use it, right? Yes. And the quota is not only on CPU, or it's not only on IP address, it's not only on virtual machine ka number. एक और quota भी, I'll show you. There are number of quotas. So next time, whenever you create a machine, guys, and if you get a quota error, please do not send a screenshot in the group or do not raise it to me. Right? I want you to resolve it by your own. आप लोगों को सबको error इसका access है, reader access. Go there and check who's utilizing the more resource. Ping to that person that I see your machine is there. Do you want me to delete it or can you please delete it? Group में कर दो ping चाहिए तो. Or you can let me know also that Suhel, can you please delete this machine if it is done? But I want you to go ahead and search कि quota का error क्यों आ रहा है. You don't just send me the screenshot. I'm getting quota error. What to do? I'm not expecting that. Now I expect you to do some troubleshooting. Quota error आ रहा है. किस चीज का quota error आ रहा है? Public IP का quota error आ रहा है. CPU का quota error आ रहा है. किस चीज का quota error आ रहा है? Go ahead and check. One more thing. What happens, guys? कभी कभार machine delete हो जाते हैं और उसके public IPs ऐसे ही रह जाते हैं. ओके, लकीली यहाँ पर नहीं है. आई कैन चेक, आई विल सी इफ मेरे वाले में है क्या. पब्लिक आईपी एड्रेस. समटाइम्स मशीन्स दे गेट डिलीटेड और यहाँ पर अननेसेसरी ये पब्लिक आईपी रह जाते हैं. अब नाउ आई एम नॉट श्योर इसमें से कोई मशीन है या कोई डिलीट हो गई है. सो आपको यहाँ पर मशीन तो नहीं दिखेंगे व्हेन यू गो इन द पोर्टल एंड यू सी कि यार मशीन तो एक भी नहीं दिख रही एंड आई एम स्टिल गेटिंग कोटा कि 3 पब्लिक आईपीज हैव बीन यूज्ड. सो यू विल कम हियर एंड चेक. Though you will not be able to delete it. Why? Because let's say Sharmili is accessing and she checks के यहाँ पर शाहरुख का जो है एक public IP है. Will she be able to delete a public IP from his resource group? No. No. So you guys will have to raise it to me, put it in resource group, but I want you to do the troubleshooting, guys. Right? तो कोटा का error लेकर मत आ जाना. And please make sure when I ask you to delete something, please delete something. Now you already know why to stop a virtual machine, right? Stop or deallocated में क्या difference है? Because we don't want to pay extra for those virtual CPUs and RAM. Why should we pay? जब stop करने का option है तो, right? Then there is one more quota. Quota is not only related to your this one, to public IP and number of machines. Let's say there is only one machine, एक ही machine है, लेकिन उस machine का size मैंने आपको practical में क्या बोला था? That you should have ये साइज. कहाँ का मशीन का साइज? लेट मी चेक. Suddenly I can't see that option. Oh. This is your image. Where is it, guys? Where do we get machine size option? You guys created few machines, right? Where do I get the option where I can select the machine In size? disks. Here it is. No, it's not in disk. It's in the basic only. यहाँ पर होगा ये रहा machine size. So guys, look at this request quota. ये भी option दे दिया है इसने यहाँ पर. But it will they reject the request even if you request it. Sometimes they may accept, but हमको यहाँ पर quota बढ़ाना नहीं है. But there is an option to request the quota. वो एक चीज याद रखो. और हमको यहाँ पर quota बढ़ाना नहीं. We have to learn how to utilize the quota. वो सीखना है हमको. So I was saying कि quota सिर्फ number of machines पे नहीं है. ठीक है. I asked you guys to create one machine
with very small size, इसमें सिर्फ एक CPU और आधा GB RAM यूज हो रहा है, because I know by that logic 3 of you will be able to create a machine, but you did not read the request properly और आपने जाके यहाँ पर जो भी highest available है उस मशीन को ले लिया आपने, ठीक है, let's say East US, and whichever the highest available size is there, you have already taken that. So do you think, let's say कि आपके पास जो है वर्चुअल सीपीयू का कोटा है, फ्री सब्सक्रिप्शन का होता है 3. So I asked you to create a machine, 3 of you, I asked you to create a machine, 3 मशीन बनाओ या सबको एक एक मशीन बनाने बोली, but I asked you to take this size. By the way, ये साइज भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, but instead of this one of you created this and another one created this one. Third person कर पाएगा एक मशीन create? What do you think? Quota finish. Yes, कोटा फिनिश, क्योंकि आपका वर्चुअल सीपीयू का भी कोटा है 3 वर्चुअल सीपीयू का, which you already used. You could have used wisely, एक यूज करके तो 3 लोग बना पाते थे, पर किसी एक ने इसको 2 यूज कर लिया तो किसी एक और का प्रैक्टिकल रह जाएगा. Understood guys? Is it clear? Yes. And let me Yeah. see. Let's say someone created, let's say आपका 4 का कोटा है and I asked you to create machines with this size, एक पर्टिकुलर साइज जिसमें सीपीयू का साइज 1 है, बट किसी ने आके ये 4 वाले को बना दिया. एक ही मशीन में आपका सारा कोटा खत्म हो जाएगा. Remaining members will get quota error. So make sure guys you do not do that. Make sure you stick to size whatever I ask you to create. I will be giving you more homework today. Machines, and this time I will be very specific कि मुझको कोई मशीन अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए, अवेलेबिलिटी सेट में चाहिए, अगर अवेलेबिलिटी सेट में चाहिए तो कितने डोमेन, कितने फॉल्ट डोमेन से अपडेट डोमेन चाहिए. I'll be very specific with this instructions and I expect you guys to follow that thoroughly. Okay, now this one, why do I create separate resource group? Let's see, it is very easy guys. तो मैं यहाँ पर आता हूँ ना, instead of deleting all these, ये सब delete करने से अच्छा simple thing for me is just go ahead and delete the resource group. You cannot afford to do this because आपका एक ही resource group है और आप नया नहीं बना पाओगे. So you never delete your resource group. I am doing it because ये machines मेरे काम की भी नहीं है. Done. एक resource group delete करने का मैंने option दे दिया. And when I select delete resource group, तो resource group by default वो सही order में करेगा. If I go ahead and I start doing that और मैं पहले network को delete करने लग जाऊं, it won't work, right? So that's all guys. That's all for today. We have only 2 minutes left. I'll be closing the session. We'll be assigning some tasks, some questions. Please go ahead and try to make sure to do this throughout the week, not on the Friday night, guys, please. It will see you next week. And I hope we have enough to learn this week. I'll be sharing some questions. And in middle of the week, I may have one session of 1 hour, which is not recorded, just for the random questions. Casual session होता है वो. उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, एंड दैट इज नॉट रिकॉर्डेड. आई विल शेयर द इनवाइट एटसेट्रा. जिसको फिजिबल है ज्वाइन कर लेना, जिसको नहीं हो मत करना. क्लास पोर्शन कवर नहीं होगा उसमें, ओनली बेसिक क्वेश्चंस विल टेक. ओके गाइस, सो सी यू नेक्स्ट वीक. बाय. Okay. Bye. Thank you. Bye. थैंक यू, बाय.